गुड इवनिंग फ्रेंड्स। आज हम लोग बात करेंगे। चलिए आज बात करते हैं हम लोग प्रोबेबिलिटी 12th क्लास एक्सरसाइज 13.3 एनसीईआरटी। ठीक है, इससे पहले हम लोग एक्सरसाइज 13.1 और 13.2 कर चुके हैं। ठीक है, चलिए तो इसका हम लोग क्वेश्चन की बात करें। क्वेश्चन हमारा पहला जो क्वेश्चन है कहता है एन अर्न contain 5 रेड एंड 5 ब्लैक बॉल्स, है ना। क्या कहता है एन अर्न, अर्न होता है जब कोई सर्कुलाकार कोई गोलाकार घड़ा की तरह से जो हमारा कोई बर्तन होता है उसको बोलते हैं कि अर्न कंटेन 5 रेड एंड 5 ब्लैक बॉल्स। कहता है उस गोलाकार बर्तन में 5 रेड और 5 ब्लैक बॉल्स है। क्लियर। ए बॉल इज ड्रॉन एट रेंडम, एक बॉल को अचानक उस घड़े से निकाला गया। ठीक है, इट्स कलर इज नोटेड, कहता है उसमें चिन्हित किया गया कलर से, एंड इज रिटर्न्ड टू द अर्न, कहता है उस घड़े में फिर से रिटर्न कर दिया गया। मोर ओवर, है ना, कहता है के अतिरिक्त 2 एडिशनल बॉल्स ऑफ द कलर ड्रॉन आर पुट इन द अर्न, कहता है उसमें दो एडिशनल दो और बॉल उसमें रख दिया गया। एंड और देन ए बॉल इज ड्रॉन एट रेंडम, तब कहता है उसमें से तब एक बॉल को रैंडमली निकाला गया। व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट द सेकेंड बॉल इज रेड, रेड होने की प्रायिकता। ठीक है, चलते हैं। अर्न contains 5 रेड एंड 5 ब्लैक बॉल्स, कहता है कि उस थैले में सर्कुलाकार जो थैला है, गोलाकार जो थैला है, बर्तन है, कहता है उसमें से कहता है कि 5 रेड और 5 ब्लैक बॉल्स, एक टोटल मिला के हमारा हो गया 10। पहला जो क्वेश्चन क्या रहता है, यहाँ से दो क्वेश्चन यहाँ से करें। लेट ए रेड बॉल इज ड्रॉन, अब रेड बॉल को जो ड्रॉन होने की क्या प्रायिकता है, प्रोबेबिलिटी ऑफ ड्रॉइंग ए रेड बॉल, रेड बॉल 5 है, टोटल है 10, तो 5/10 इक्वल टू 1/2। नाउ 2 रेड बॉल्स आर एडेड टू द अर्न, कहता है अगर उसमें से दो बॉल को, क्योंकि पता है आपको कि 5 रेड है 5 ब्लैक है, उसमें दो रेड बॉल को ऐड कर दिया गया। क्लियर, जब आप यहां से ऐड कर देंगे तो वो 5 हो जाएगा हमारा रेड बॉल 7। द अर्न कंटेंट 7 रेड बॉल्स एंड 5 ब्लैक बॉल्स, प्रोबेबिलिटी ऑफ ड्रॉइंग ए रेड बॉल्स कितना हमारा हो जाएगा, तो 7/12, क्योंकि हमारा 7 5 12। क्लियर। एंड लेट ए ब्लैक बॉल इज ड्रॉन एट फर्स्ट अटेम्प्ट, प्रोबेबिलिटी ऑफ ड्रॉइंग ए ब्लैक बॉल कितना का 5/10, टोटल 5, ब्लैक बॉल 5 है तो 5/10 इक्वल टू 1/2। क्लियर। चलिए नेक्स्ट टू ब्लैक बॉल, black balls are added to the urn. Clear. Therefore now urn contains 5 red and 7, दो जब ऐड करते 7 ब्लैक बॉल हो जाएगा, 7 ब्लैक बॉल बॉल्स। क्लियर। Therefore probability of getting a red ball equal to 5/20 of drawing a second ball as red equal to 1/2 into 7/12 plus 1/2 into 5/12। क्लियर।
अगर इसको आपने कटा देंगे क्या आ जाए, ये कितना कट के मेरा 1/, रिजल्ट हो गया। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। कहता है ए बैग कंटेन्स 4 रेड एंड 4 black balls, another bag contains 2 red and 6 black balls, है ना। one of the 2 bags is selected at random and a ball is drawn from the bag which is found to be red. Find the probability that the ball is drawn from the first bag, है ना। क्वेश्चन क्या कहता है, ए बैग कंटेंस, एक बैग में 4 रेड और 4 ब्लैक बॉल्स है। कहता है अनदर बैग कंटेंस, दूसरे बैग में 2 रेड एंड 6 ब्लैक बॉल्स। क्लियर। वन ऑफ द 2 बैग्स, कहता है उस दो बैग में से कोई एक इज सेलेक्टेड, चुनना है, एट रैंडम, अचानक, एंड ए बॉल इज ड्रॉन फ्रॉम द बैग विच इज फाउंड टू बी रेड। कहता है अगर उस बैग से अगर चुनना रहेगा कोई एक बैग ना, कहता है कि विच इज फाउंड टू बी रेड, कहता है रेड होने की क्या संभावना है। फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट द बॉल इज ड्रॉन फ्रॉम द फर्स्ट बैग, कहता है पहले बॉल से क्या प्रायिकता होगी, क्या प्रोबेबिलिटी होगी रेड होने की। ठीक है, चलिए ये कहता है निकालने के लिए इसको हम लोग सॉल्व करते हैं। लेट पहले वाले को E1 मतलब इवेंट, इवेंट मतलब घटना, लेट E1 एंड E2 be the events of selecting the bag therefore probability of selecting one of the bag is equal to 1 by probability of E1 is equal to probability of E2 is equal to कितना में रहेगा 1/2। फर्स्ट बैग contains 4 red balls and 4 black balls, है ना। therefore probability of selecting a red ball from it is equal to 4/8 is equal to आ गया मेरा 1/, probability of A upon E1 is equal to 1/2 where A denotes the red balls, red ball, clear। second bag contains 2 red and 6 black balls, 6 black balls, probability of selecting a red
ball from it is equal to probability of A upon E2। मेरा कितना आ जाएगा ये 2/8 कट क्या जाएगा 1/4। क्लियर। नाउ A इज इक्वल टू क्या फॉर्मूला होगा इसका प्रोबेबिलिटी ऑफ E1 into probability of A upon E1 upon probability of E1 into probability of A upon E1 plus probability of E2 into probability of A upon E2। इन सब का मान निकाल चुका, इसका मान रख दीजिए। कितना मेरा था प्रोबेबिलिटी ऑफ E1 का मान मेरा 1/2 आया हुआ है। क्लियर। और इसका भी मान हमारा 1/2 अपॉन इसका मान 1/2 इंटू 1/2 प्लस इसका मान आया होता 1/2 इंटू 1/4। क्लियर। अगर इसको आप सॉल्व करेंगे ऊपर वाला जाएगा कितना 1/4 नीचे आ गया 1/4 प्लस 1/8। क्लियर। अगर ये बात करें तो 1/4 और यहाँ से एलसीएम हो जाएगा 8। ये हो गया मेरा 2 + 1 1/4 और ये 3/8 हो गया तो पलट जाएगा तो ये हमारा जाएगा 8/3 कट के हो गया मेरा कितना 2/3। ये आपका फाइनल। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। कहता है ऑफ द स्टूडेंट इन ए कॉलेज, एक कॉलेज के स्टूडेंट it is known that 60% reside in hostel, मतलब उसका 60% बच्चे हॉस्टल में रहता है and 40% are day scholars, 40% जो है कहता है ब्रैकेट में दिया है नॉट रिसाइडिंग इन हॉस्टल, हॉस्टल में नहीं रहता है। क्लियर। प्रीवियस ईयर रिजल्ट्स रिपोर्ट दैट 30% ऑफ ऑल स्टूडेंट हु रिसाइड इन हॉस्टल अटेन ए ग्रेड। कहता है जो पिछले साल का जो कहता है जो हॉस्टल में जो बच्चे रहते थे, यहाँ पे लिखा हुआ है प्रीवियस ईयर रिजल्ट्स रिपोर्ट्स दैट 30% ऑफ ऑल स्टूडेंट हु रिसाइड इन हॉस्टल अटेन ए ग्रेड। कहता है उसमें से जो हॉस्टल में रहता था 30% उसमें से बच्चे ए ग्रेड प्राप्त किया था, ए ग्रेड था। and 20% of day scholar attend A grade in their annual examination। कहता है उसमें से 20% जो स्कॉलर अटेंड मतलब जो हॉस्टल से बाहर आता था 20% बच्चे वो कहता है ए ग्रेड प्राप्त किया था, ए ग्रेड था। एट द एंड ऑफ द ईयर, साल के अंत में वन स्टूडेंट इज चूजन एट रैंडम फ्रॉम द कॉलेज। कहता है उसमें से साल के अंत में अगर कॉलेज से एक स्टूडेंट को अगर चुनना रहेगा कहता है एंड और ही हैज एन ए ग्रेड। कहता है अगर उसने ए ग्रेड प्राप्त किया हो तो व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट द स्टूडेंट इज हॉस्टलर, बाहर का बच्चा होगा वो। तो कहता है उसको प्रायिकता बताने के लिए क्लियर। एक E1 E2 denote the event that a student is a hostler। Clear। and a day scholar respectively। It denotes that
A student is getting grade A. Probability that a student is a हॉस्टलर इक्वल टू कितना था मेरा 60% इक्वल टू मेरा आ जाएगा 0.6 क्लियर probability that a student is a day scholar is 40% equal to 0.4. Probability that a student है ना who is a hosteler equal to 30% equal to 0.3 क्लियर इसको ही बोल सकते हैं हम लोग प्रोबेबिलिटी ऑफ a अपॉन e1 क्लियर probability that a student gets grade A who is a day scholar probability of a upon e2 is equal to 20% is equal to 0.2 probability that a scholar probability that a hostler is getting grade A is equal to probability of E1 upon A अगर इसकी फार्मूला की बात करें तो कितना मेरा हो जाएगा probability of E1 into probability of A upon E1 upon probability of E1 into probability of A upon E1 plus probability of E2 into probability of A upon E2 क्लियर इन सब का मान निकालने से तो मान रख देते हैं हम लोग अगर मान रखेंगे तो कितना मेरा आ जाएगा यहाँ से इसका मान है probability of E1 का मान है 0.6 into 0.3 upon 0.6 into 0.3 plus 0.4 into 0.2 इक्वल टू ये मेरा आ जाएगा ऊपर लगा मल्टीप्लाई कर 0.18 और नीचे जाएगा मेरा 0.18 प्लस 0.08 अगर नीचे वाले को ऐड कर देंगे तो 0.18 अपॉन 0.26 और ये कट के मेरा आ जाएगा 9/30 ये आपका फाइनल रिजल्ट हो गया नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं हम लोग
In answering a question on a multiple choice test, a student knows the answer or guesses. Let 3 upon 4 be the probability that he knows the answer, and 1 by 4 be the probability that he guesses. Assuming that a student who guesses at the answer will be correct with probability 1 by 4. What is the probability that a student who knows the answer given that he answered it correctly? कहता है कि इसके बारे में ये क्वेश्चन हम लोग पहले समझ लेते हैं। क्वेश्चन कहता है एक मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन टेस्ट है, ठीक है, और उसमें कहता है वो जो आंसर जो देता है उसका आंसर जो देता है उसका वो कहता है ये हमारा आंसर और गेसेज, मतलब उसका उत्तर जो होगा या अनुमान जो लगाएगा। लेट 3 by 4 बी द कहता है आंसर और गेसेज, उसका जो आंसर आता है और या उसका जो गेस करता है अनुमान जो लगाता है, कहता है जो आंसर आता है 3 by 4 एंड उसका जो गेस करता है वो 1 by 4। तब कहता है दैट ही गेसेज, तब उसका अनुमान जो है assuming that a student who guesses at the answer will be the correct with probability 1 by 4, जो सही आता है आंसर गेस करने के बाद उस स्टूडेंट का कहता है 1 by 4। व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट ए स्टूडेंट हु नोज द आंसर, कहता है उस स्टूडेंट का क्या आंसर आएगा, उसकी क्या प्रायिकता होगी, गिवन दैट ही आंसर्ड इट करेक्टली। जब उस तब कहता है उनसे जो दिया हुआ आंसर उसका करेक्टली सही क्या होगा, यही पता निकालना, ठीक है। चलिए इसको हम लोग सॉल्व करते हैं। लेट द इवेंट E1 is equal to student knows the answer, ठीक है। ये E1 मान लिए, E2 हमारा क्या हो जाएगा, E2 is equal to he guesses the answer, क्लियर। तब यहां से कहता है हमारा प्रोबेबिलिटी ऑफ E1 कितना दिया हमारा 3 upon 4, E2 इक्वल टू कितना 1 by 4। लेट A is the event that answer is correct. If the student knows the answer, answer is correct. Correct. Therefore, probability of A upon E1 is equal to 1 when he guesses the answer Therefore, probability of A upon E2 is equal to 1 by 4. Therefore, probability that a student the answer given
that answer given that answer is correct. करेक्ट क्या हो जाएगा प्रोबेबिलिटी ऑफ E1 अपॉन A इक्वल टू फॉर्मूला हो जाएगा प्रोबेबिलिटी ऑफ E1 इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ A अपॉन E1 अपॉन प्रोबेबिलिटी ऑफ E1 इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ A अपॉन E1 प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ E2 इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ A अपॉन E2। क्लियर। इन सब का मान ऊपर में हमारा है दिया हुआ है, वहां से रखेंगे हम लोग। ये मान मेरा कितना है यहां से कर सकते हैं 3/4 इंटू 1, 3/4 इंटू 1 प्लस 1/4 इंटू 1/4। क्लियर। तो इसको सॉल्व करेंगे तो ये 3/4 अपॉन 3/16 और कटाने के बाद आ जाएगा कितना मेरा फाइनल 12/13। ये आपका फाइनल रिजल्ट हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं हम लोग। कहता है ए लेबोरेटरी ब्लड टेस्ट इज 99% इफेक्ट इन डिटेक्टिंग ए certain disease when it is in fact present. However, test also yields a false positive result for 0.5% of the healthy person tested. If 0.1% of the population actually has the disease, what is the probability that a person has the disease given that his test result positive? है ना। ये क्वेश्चन लेबोरेटरी ब्लड टेस्ट एक खून जांच की प्रयोगशाला है जिसमें कहता है 99% इफेक्ट इन डिटेक्टिंग ए सर्टेन डिजीज, एक कहता है निश्चित बीमारी के लिए कहता है 99% इफेक्ट है when जबकि इनफैक्ट जैसा कि प्रेजेंट वर्तमान में, however जैसा कि टेस्ट also yields a false positive result for 0.5%। कहता है जब टेस्ट किया गया उसमें से कहता है जो शेष बचा 0.5% जो है उस हेल्दी पर्सन के टेस्ट में कहता है पॉजिटिव रिजल्ट उसका फॉल्स आया। और कहता है यहाँ सब आगे if 0.1% of the population actually has the disease, कहता है अगर 0.1% जनसंख्या का अगर बीमारी उतनी जनसंख्या का जो बीमारी हमारा है कहता है if 0.1% of the population actually has the disease, कहता है जनसंख्या का अगर एक्चुअल बीमार जो है डिजीज है बीमारी जो है वो 0.1% हो, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट ए पर्सन, कहता है क्या प्रायिकता होगी लोगों की हैज द डिजीज गिवन दैट हिज टेस्ट रिजल्ट पॉजिटिव, कहता है टेस्ट रिजल्ट के पॉजिटिव में जो बीमारी जो आया उसकी क्या प्रायिकता होगी। ठीक है। let E and E dash denote the events that a person has disease and does not have disease respectively।
respectively. A is equal to blood test is positive. Clear? Probability that a person has the disease, the probability of E is equal to 0.1%, is equal to 0.001. Clear? Probability that a person does not have the is equal to probability of E dash is equal to 1 minus probability of E. क्लियर? जबकि इसका मान दिया 1 माइनस इसका मान दिया हुआ हमारा 0.001, और इसको आपने सब्ट्रैक्ट कर दें तो मेरा कितना आएगा 0.999. क्लियर? Probability that a person who has a disease and blood test is positive. Clear? तो probability of A upon E is equal to मेरा हो गया 99%. क्लियर? is equal to मेरा हो गया 0.999. Probability that a person does not suffer from disease but has positive blood test is equal to probability of A upon E1 is equal to 0.005. Now probability that a person having the disease as well as have positive blood test is equal to probability of E upon A, और इतना बड़ा फॉर्मूला हो जाएगा मेरा यहाँ से probability of E
into probability of A upon E upon probability of E into probability of A upon E plus probability of E dash into probability of A upon E dash। क्लियर। अगर इसका मान हम रख दें यहाँ से, इसका मान मेरा 0.001 इंटू 0.999 अपॉन 0.001 इंटू 0.999 प्लस 0.99 इंटू 0.005, तो ये आ जाएगा मेरा 0.0099। क्लियर। अगर नीचे वाला मेरा आ जाएगा 0.0099 प्लस 0.00499 क्लियर 5। अगर नीचे वाले को अगर ऐड कर देंगे तो ये मेरा हो जाएगा 0.00099 अपॉन 0.05985। अगर इसको डेसिमल को अगर हटाएंगे तो ये आ जाएगा 990 अपॉन 5985। अगर यहाँ से कट करेंगे तो 198 अपॉन 1197, और कट रहा है तो आ जाएगा ऊपर आ जाएगा हमारा, कटाएंगे तो 22 अपॉन 133 का फाइनली। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। कहता है देयर आर 3 कॉइन्स, वन इज टू हेडेड कॉइन, another is a biased coin that comes up head 75% of the time, and third is unbiased coin. One of the 3 coin is chosen at random and tossed. It shows head. What is that probability that it was the two-headed coin? है ना, ये क्वेश्चन दिया है, इसको पहले हम लोग समझ लेते हैं। क्वेश्चन कहता है देयर आर 3 कॉइन्स, 3 सिक्के हैं, वन इज टू हेडेड, कहता है 2 बार जब हेड आता है सिक्के का, कहता है वो 1 आता है हमारा। अनदर इज ए बाइस्ड कॉइन, बाइस्ड मतलब होता है हमारा यहाँ से पक्षतापूर्ण, मतलब सपोर्ट पक्ष। कम्स अप हेड 75%, तब उसमें से कहता है हमारा 75% जो हेड आने की प्रायिकता आता है ऑफ द टाइम, उस समय। एंड थर्ड इज एन अनबाइस्ड, निष्पक्ष क्वाइन, मतलब बिना पक्षपात। वन ऑफ द 3 कॉइन इज चोजन एट रेंडम, अचानक उसमें से कोई जब उस 3 कॉइन, 3 सिक्के को निकालते हैं, एंड टॉस्ट उसको उछालते हैं, इट शोज हेड, तब वो हेड दिखाता है। व्हाट इज दैट प्रोबेबिलिटी दैट इट वाज द टू हेडेड कॉइन, कहता है 2 हेड आने की प्रायिकता क्या होगी, यही पूछ है। ठीक है, चलिए हम इसको सॉल्व करें। There are 3 coins, probability that one of them is selected, कहता है सेलेक्टेड कितना हमारा देखो 1/3, क्यों 3 में से हमारे को एक चुनना है। इफ E1 E2
E3 is the event of selecting a coin and A is the event of getting a head। क्लियर? तो यहां से कह सकते हैं प्रोबेबिलिटी ऑफ E1 इक्वल टू प्रोबेबिलिटी ऑफ E2 इक्वल टू प्रोबेबिलिटी ऑफ E3 इक्वल टू, तीनों हमारा होगा इक्वल। क्लियर? फर्स्ट coin is two headed। It will always two head, that is probability of A upon E1 is equal to 1। Clear? The second coin is biased and had come up in 75% cases। Probability of A upon E2 is equal to 0.75 is equal to 3/4। Clear? Third coin is unbiased is equal to 1/2। Probability of E1 upon A is equal to probability of E1 into probability of A upon E1। So probability of E1 into probability of A upon E1 plus probability of E2 into probability of A upon E2 plus probability of E3 into probability of A upon E3। क्लियर? इन सब का मान मालूम है हमारे को, ऊपर निकाल चुके हैं यहाँ से। कितना? 1/3 इंटू 1 अपॉन 1/3 इंटू 1 प्लस 1/3 इंटू 3/4 प्लस 1/3 इंटू 1/2। अगर इसको सॉल्व कर देंगे, ऊपर आ जाएगा 1/3 और नीचे आ जाएगा 1/3 प्लस 1/4 प्लस 1/6। अगर इसको सॉल्व करते ये 4/9। ये आपका फाइनल रिजल्ट।